गुड मॉर्निंग सभी भैया दीदी का स्वागत है अपने लाइव स्ट्रीम में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, बस यही माँ से विनती है हमारी कि आप सब हमेशा खुश रहें। फटाफट आप लोग हमारे लाइव से जुड़ जाइए। सभी दर्शकों का स्वागत है। राम राम सभी को, राम राम।
राम राम सभी भैया दीदी को राम राम। थैंक यू। राधे राधे सभी को राधे राधे।
स्वागत है रंजना दीदी, स्वागत है किरण दीदी, स्वागत है लाइव में। राधे राधे सभी बहनों को। जय श्री कृष्णा।
थैंक यू अस्मिता सिस्टर, थैंक यू शिव बहादुर भैया। आप कौन कौन है लाइव में? मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं सो गई। किसी का जवाब ना दिए ना किसी से बात किए, बुखार आया था ना, मैं सो गई। अब कौन कौन है मेरे लाइव में ज़रूर बताएं। लगभग सभी चले गए हैं। हाँ, लगभग सभी चले गए। सुनीता दीदी ऑन है, स्मिता सिस्टर बाय कर लिए, ओके। थैंक यू सभी भाई बहनों से। हम बात नहीं कर पाए, तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ बात करने का मन नहीं था, बुखार हुआ है, दवा खा के ऑलरेडी। राधे राधे सभी को, राधे राधे। सुनीता दीदी राधे राधे। तबीयत नहीं ठीक है दीदी, बुखार हो गया, लेटी थी, सो गई। कब कौन आए, सबकी आईडी इसमें दिख रही है बाकी, और हम बात नहीं कर पाए। धीम कर लेना आप, जौन कंडा आप खींच के मारो। 150 सभी करके चले गए, सभी लोग 150। रिंकू भैया भी आए थे। स्मिता सिस्टर का 150 हो गया। गीता दीदी आई थी, पूजा सिस्टर, दिव्या सिस्टर, दिव्या सिस्टर आधा घंटा करके चली गई। शिवानी दीदी आधा घंटा करके चली गई। शिव बहादुर आए हैं, किरण दीदी आधा घंटा किए हैं। आरती सिस्टर, थैंक यू सभी भाई बहनों को, राधे राधे सभी का, धन्यवाद है सभी का, धन्यवाद। राम राम।
थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू। राधे राधे सभी भैया दीदी को, राधे राधे। राम राम सभी को, राम राम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
रात सलाद उलाद बना था परसों। स्वागत है आंटी जी, आपका लाइव में स्वागत है। कैसी हो आंटी जी? आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लाइव में आई हैं। कुछ नहीं आंटी जी, मैं आज तबीयत नहीं ठीक है, दवा खा के लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ। मोमोज भी नहीं बनाई, सर दुख रहा है, बुखार हुआ है ना, आराम कर रही हूँ, लेटी हूँ। आज काम नहीं कर पा रहे हैं, 10 बजे तक काम किए, उसके बाद काम करने का मन नहीं हुआ। अरे बात तो करो, बाहर निकाल के आओ सुमन। मेरी आवाज़ तो जा रही होगी। मोमोज तैयार कर रहे हो? राधे राधे। नहीं, मोमोज नहीं तैयार कर रहे हैं। तबीयत तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी भाभी लोग चली गई। हाँ, आपकी लाइफ में बता रही थी ना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी, तो आप बता रही थी कि मैं अकेली थी, आज मंदिर का पूजा न कर पाई। भाई वो चली गई हैं बहू लोग। एक लोग का, दामाद का पैर में हो गया फ्रैक्चर, मतलब वो गड्ढे में चला गया है पैर। सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, और हमको ना मतलब काम रहता है, बच्चों का टिफ़िन उफ़िन, आपके बात को जवाब नहीं दे पा रहे थे। आपकी सारी बातें सुन रहे थे, जो कह रही थी कि आज मैं ऐसे काम करके बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। सुमन जी, आप भी बहुत ईमानदारी से हो रहती। हाँ, ईमानदारी, वही मैं जवाब नहीं दे रही थी, सारी बातें सुन रही थी कि पैर में दुख लग गया है, और उसी को देखने के लिए सब लोग चली गए हैं, बहुएँ लोग कल आएंगी, आज आएंगी नहीं। हमको उसी वजह से आज मंदिर का पूजा भी नहीं हो पाया अच्छे से, और हम काम में ही, बच्चों का भी नाश्ता खाना पानी सब देना बनाना है। नाश्ता तैयार किए, सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन हम कमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम मोबाइल ऑन करके रख दिए थे जोड़ कर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। बच्चे घर पे आ गए हैं ना स्कूल से, प्यार प्यार लगाए हैं, देखो बातें कर रहे हैं आपस में, तीनों के तीनों ना आपस में छोटी छोटी सी चीज़ से लेके ना बातें छेड़ देते हैं। आदत छूट जाती है फिर नहीं होता। हाँ, आदत नहीं, उम्र भी हो गई है, ऐसी बात नहीं है। उम्र और भाई, उम्र के हिसाब से भी काम तो करना बहुत हो जाता है, आदत भी छूट गई है, बहुएँ लोग आ गई हैं, खाना पीना सब चीज़ देखती रहती है, तो करना पड़ेगा, तो भारी तो लगेगा। फिर भी आपने इतना हिम्मत किया, साथ में लाइव भी चालू किया, सब कुछ अपना देखा। सौरभ भैया का थोड़ा आपको सपोर्ट अब मिल जा रहा है, शायद सौरभ भैया पहले आपका सपोर्ट किए होते, अब तक तो हो गया होता। सौरभ भैया अगर आपका समय निकाल निकाल के पहले ऐसे किए होते ना, लाइव में बैठे होते या लाइव को कमेंट देखे होते और दूसरों को सपोर्ट करे होते ना, तब हो जाता। सौरभ भैया अब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, आदत छूट जाती फिर चाहे कोई 20 मिनट आए या 10 मिनट आए, मालूम है मंदिर में जुड़े रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, मंदिर से कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा, भगवान के सामने कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। जिसको जितना समय आएगा वो दे के जाएगा, क्या करे। अच्छा भी लगता है आपके मंदिर का दर्शन। सभी अपने भाग दौड़ में इतनी बिजी हैं कि समय नहीं किसी के पास है आंटी जी, बस भागते चले जा रहे हैं, भागते समय चले जा रहे हैं ना, ठहरने का नाम नहीं है। जिस जिसका चैनल मोनो नहीं है, मोनो के लिए परेशान रहता है, जिसका चैनल मोनो हो जाता है वह डॉलर के लिए परेशान रहता है। ये नहीं कहने का तात्पर्य है जितना धन मिले उतना कम रहता है इंसान को,
तो उसी के चक्कर में भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। मंजिल को पाने के लिए रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बैठकर आराम से 1 मिनट के लिए बात करना किसी के लिए नहीं है टाइम। सभी अपने अपने में मस्त रहते हैं। करे क्या, यही प्राकृतिक का देन है कि समय के साथ चलना पड़ता है। जा चना लिया मस्त भूजा चना चबा ले, बुखार सही हो जाए। जा शुभम कोई सुनता था, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। अच्छा शुभम कोई नहीं सुनता था, अभी इसने सभी से कहते थे कोई नहीं सुनता था। ऐड चल रहे हैं, ओके। हाय स्मिता सिस्टर, हाय। आज आपने हमारा सपोर्ट किया है। मैं दवा खा के सो गई, आपकी आईडी आई थी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। टाइम कहाँ है, मेरा आशीर्वाद है बस। हाँ मुझे पता है आंटी जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हम इसलिए तो आपसे कभी शिकायत नहीं, हमको भी आपसे कभी भी शिकायत नहीं है। बस वही हम बता रहे हैं ना कि मंजिल के पाने के चक्कर में सभी लोग भागते जा रहे हैं, उसी में हम भी हैं भाई, भागते जा रहे हैं। कहीं भी ठहरने का नाम नहीं है, आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, हमें खुद ही अपने आप में सोचते हैं। आपका गीत भजन सुनते जा रही हूँ, आपके चैनल पर जब तक लाइव मिल गई है। अच्छा मेरे भजन सुनना, तो उसमें एक पॉइंट वाला है पाया है, किनारे में जब लाइक करती हो तो लिखा रहता है HEPY, हाइप किनारे में रहता है, उस पर टच करोगी तो पॉइंट कुछ मिल जाएगा मुझे। जैसे मेरे वीडियो सुनने गई आंटी जी, वीडियो सुन रही हो, उसी समय लाइक करोगी, लाइक करने के बाद जहाँ कमेंट लिखती हो वहीं हाइप वाला किनारे में यच से लिखा रहता है, HEPY ऐसा कुछ लिखा है, उस पर टच करोगी, फिर नीचे टच करना होता है, वहाँ से पॉइंट बढ़ जाता है। कर सकते हैं तो करो, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, सबको नहीं आ रहा है। सभी को थैंक यू, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। हेलो दीदी, अरे स्मिता बहना बोल तो रही हूँ, आप बताइए खाना हो गया? खाना हो गया आपका? भोजन हो गया? क्या कर रही हो स्मिता? खाना हो गया है, हमारा भी अभी हुआ खाना। वही तो आज अपनी लाइफ में किसी का बोला नहीं, किसी से बात ही नहीं किए, है ना। ये लाइफ के चक्कर में रात को जाग जाओ, और उसके वजह से, और ये बुखार का मौसम चल रहा है ना, बुखार, उसकी वजह से तबीयत डाउन थी, तो दवा खाई तो मुझे बहुत नींद आई। मैं आज के दुकान का काम भी नहीं किए, मोमोज भी नहीं बनाई, हमारे परिवार के लोग सब लोग किए, हम आके सो गए। किसी का से ना बात किए ना किसी को, मोबाइल मेरी चलती रही चलती रही। आप सब आई थी, सपोर्ट किए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से धन्यवाद है आंटी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। स्मिता हमारा लॉन्ग वीडियो सुन लिया करो, लॉन्ग वीडियो जो मेरा गीत है 6 मिनट के 8 मिनट के, उस गीत को सुनिए, उस पर आता है, लाइक करोगी, लाइक करने के बाद ना पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे टच करो। अल्लाह
कब कब चलाओगी स्मिता अपना लाइव? टाइम फिक्स कर लीजिए अपना। सपोर्ट कर रही हो तो टाइम अपना फिक्स कर लीजिए जब चलाना हो, ताकि भाई हमें जो समय मिलेगा हम भी आ जाएंगे। ठीक है दीदी, कर देंगे देना। अच्छा, करना आता है आपको? समझ रही हो मेरी बात को? मैं सोच रही आप समझ नहीं पा रही हो। जब लाइक करोगी, मेरे गाने में जाओगी, 5 मिनट का 8 मिनट का मेरा जो गीत रहता है उस पर जब लाइक करोगी गाना सुनते सुनते, तो लाइक करने के बाद जहाँ कमेंट लिखा रहता है, तो कमेंट के बाएं दाहिनी तरफ आ जाता है, खसक के ऐसे आ जाता है, नंबर स्टार का रहता है, उस पर लिखा रहता है यस जी। उस पर अगर टच करोगे किनारे पे, यस रहेगा, यस टच करोगी, फिर नीचे आके नीचे दिखाएगा नंबर, उस पर टच करोगी। जब तक लाल ना हो जाए तब तक आपको 3 बार टच करना है। हमें पता है। अरे तुझे पता है तो तू करती क्यों नहीं? स्मिता को बता देना फ़ोन पे। तुझे तो सब पता है, जो मेरी चेला बन गई ना, तो तुझे पता ही रहेगा। आंटी जी, आपको पता है आप हमारे फ़ोन से लाइव में बताओ। अच्छा अच्छा, चलो मैं थोड़ी देर के लिए फेस से आ रही हूँ। वैसे तो आज मैं भूत बनी हूँ, भूत दवा खाई हूँ ना, ना मेरे माथे पे बिंदी है। मैं सो गई ऐसे, नहा के आई पूजा करके। तो मैं बताती हूँ आपको, जो जो भाई बहन बने हैं। अभी तो ज़्यादा लोग बने नहीं, सिर्फ आप बनी हो। हाँ तो आंटी जी, हम आपको दूसरी मोबाइल में बता रहे हैं। स्मिता जी बनी रहना लाइव में, जो जो जाना बताना हमको। अच्छा ठीक है आंटी जी, बता रहे हैं, आप देख लेना कैसे होता है। हमारा सही बात है, हमारा गीत जो है लंबा होता है, सही बात है। अगर आप हमारा लाइव में ना सपोर्ट कर पाएंगे तो आप हमारा गीत सुन लिया करो। अच्छा आंटी जी, सही बात है। हमारे दोनों चैनल पे गीत पढ़ते हैं, जो गीत सुन लिया करो दोनों चैनल पे। मोबाइल कहाँ गई शिवम? ये सभी को धन्यवाद है, मेरे लाइव में बने हुए सभी भाई बहनों को धन्यवाद है। आंटी जी फिर से आ गई हूँ, थोड़ा सा आप सबको माता रानी की झांकी। देखो यूट्यूब पे जब मेरे चैनल पे जाओगी, अच्छा बाय कर लिए स्मिता जी? मैं आपको कुछ बताने वाली थी, आप बाय कर लिए। दिखाओ सुमन, बात बात करूँगी। अच्छा अच्छा, दिखा रहे हैं।
ये देखो, जैसे हमारा गीत है इस पे टच किया ऐसे ना, ऐसे टच किया, तो यहाँ जब लाइक किए, यहाँ यहाँ जब लाइक आता है, लाइक पे ऐसे टच करोगे, ऐसे लाइक में ना देखो ये यहाँ आगे खिसक के आया कि नहीं। लाइक करने के बाद देखो ये पीला पीला आ गया, यहाँ पीला पीला आ गया है, स्टार सा ऐसे बना है, पीला पीला आ गया है। इधर किनारे में लिखा है, इस पे ऐसे टच करना है, तो यहाँ नीचे आना पड़ेगा, यहाँ नीचे ऐसे टच करना है, यहाँ नीचे टच करोगी ना यहाँ, तब हो जाएगा। देखो ऐसे आ गया, कुछ बना है देखो, तो इसके नीचे यहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट बढ़ता है यहाँ, फिर इसके बाद यहीं से होता है। आप लोग करके देखिए, स्मिता करके देखिए तो आ जाएगा। ये स्टार आ गया, लाइक करने के बाद स्टार आया, यहाँ नहीं, इस पे ऐसे टच करोगे किनारे में यहाँ, तब यहाँ नीचे ऐसे टच करोगे, यहाँ यहाँ से बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है। चाहे दुर्गा बनो, चाहे काली बनो, हनुमान बनो, भानो राम बनो, दिखाओ फ़ोन पर दिखाओ। दिखा तो रहे हैं आंटी जी, आप समझ नहीं पाई। देखो आप दिख नहीं रहा है। पहले हमारे गीत पे जाओ तब समझ में आए, गीत पे जाना पड़ेगा। जो हम गीत डाली हूँ, गीत पे जाओगी, लाइक करोगी, ये अलग यहाँ आएगा, कमेंट के जहाँ कमेंट किया जाता वहीं पर आ जाता कमेंट के द्वारा। तो कमेंट पे बाईं तरफ रहेगा, तो इस पे ऐसे टच करना है, बाईं तरफ से, दाईं तरफ है ऐसे, इस पे टच करोगे, फिर नीचे। दूर से समझ में नहीं आ रहा है, देखो ये जो पीला पीला चिन्ह बना है, ये देखो ये पीला पीला, जब कमेंट करने आती हो तो कुछ आ जाता है ऐसे, लाइक करने पे यहाँ आ जाता है, यहाँ किनारे में ऐसे दाब है। चलो नहीं आ रहा है, देखेंगे, करके देखिए फिर कमेंट करिए तो बताना। स्मिता करके देखो, कमेंट करके तब भी बताना। आप लोग गीत पहले सुनो, उस पर लाइक करो, मैं बताऊंगी तब। चलो चलो मितवा इन ऊंची नीची राहों में, कभी जागे कभी सो जाए। मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप पर से आप चेक करके बताइए, ठीक है? अच्छा अच्छा, लाइव काटेंगे तो चेक करेंगे, अभी तो उसी में चल रहा है लाइव। मैं देख रही हूँ, आप बताइएगा। आंटी जी जाओ, मेरा गीत सुनो, ऐसे मेरे गीत में चली जाओ, लाइव में ऐसे चली जाओ गीत पर, जो लॉन्ग वीडियो उस पर गीत पर जाओ, उस पर लाइक करो। लाइक करने के बाद ना जो कमेंट का बॉक्स रहता है, जहाँ कमेंट आप लिखती हो, वहीं आ जाता है ऐसे कुछ चिन्ह, स्टार की तरह दिखता है, उसके बगल में लिखा रहेगा HEP, उस पर टच करोगी, हैप बोलते हैं उसको, हैप, हैप बोलते हैं, उस हैप को टच करोगी, फिर नीचे से पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं देख नहीं जा रही हूँ, आप दिखाइएगा। समझा दो सुमन। हे भगवान, आंटी जी हम बता तो रहे हैं, अब कैसे और बताएं। ये देखो हमारा गीत चल रहा है, जहाँ हम गीत गा रहे हैं, देखो ये कौन सा आ गया, हमारा ऐड चल रहा है, ऐड ख़त्म हो जाएगा, गीत आएगा इस पे। तो गीत पे जब ऐसे लाइक करेंगे, ऐसे लाइक करती हो, तो लाइक करने के बाद जहाँ कमेंट लिखा रहता है वहीं आता है ये देखो, देखो अब हमारा जहाँ गीत जा रहा है यहीं लाइक ऐसे है, ऐसे ऐसे पहले था, ऐसे लाइक किया ऐसे, तो यहाँ ए आ गया, देखो कोने में ये पीला पीला आ गया, आप में पीला पीला दिख रहा होगा,
ये पीला दिख रहा है, देखो कुछ ऐसा बना है ना स्टार पीला। इस पीले के इधर तरफ ए है, देखो ऐसा। यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ लिखा है हैप, HYPE हैप। इस पे ऐसे नीचे टच करोगे ऐसे तो बन जाएगा, आ जाएगा। बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल के। दुल्हन का बड़ा सा बॉक्स लाई जी, देख करके अपने कमरे में रखवा लिया। एक कहानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की है। यूपी बाय बाय आंटी जी, ठीक है ठीक है। गया है दीदी, पॉइंट बढ़ गया। 3 बार करना होता है, 3 बार करना, 3 बार आएगा। बढ़ गया। ऐसे दोनों पे आता है, दोनों पे ऐसे होता है। उस पे भी मारे जाओगे, उस पे भी ऐसे आएगा। गीत पे सुनो, उस पे लाइव करो, उसमें भी आ जाएगा। सब जानकारी है, आपको भी कभी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना सोचे बलमुआ से लड़ी बैठे, बिना सोचे बलमुआ से लड़ी बैठे। क्या दीदी जी, बोलो क्या दीदी जी। जैसे मैं बताई वैसे मेरे दोनों चैनल पे गीत में हाइप आएगा, दोनों चैनल के गीत पर हाइप आता है। वैसे बढ़ाना पड़ेगा दोनों में। गीत सुनोगी, लाइक करोगी, स्टार का आएगा, उस पर साइड में रहेगा, उस पर HEP लिखा रहेगा, उस पर टच करोगी तो हो जाएगा। ठीक है दीदी, ओके स्मिता। आप चलो धीरे धीरे समझ जाओगी, पूजा सिस्टर आपको बता देगी फ़ोन पर, जो ना समझ पाई होगी। कितने बजे का ये अपना टाइम रखी हो लाइव चलाने का, क्योंकि मुझे तो आज टाइम की ज़रूरत नहीं, मुझे यही ज़रूरत है कि आप लोग ऐड देखिए, इसी से मेरा सपोर्ट है। आप कब लाइव चलाएंगे अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, ताकि जो हमको समय मिले हम भी आपको दे सकें। बिना सोचे बलमुआ से लड़ी बैठे, बिना सोचे बलमुआ से लड़ी बैठे, सोचे बलमुआ से लड़ी बैठे, बिना सोचे। नैहर के बतिया नाम के कहे, माई मोर माई समझाई, बहन समझाई, माई समझाई, बहन समझाई। सब ठीक है, लेटे हैं देख कर। अच्छा अच्छा, सीख लेते हैं देख कर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। आप तो स्मार्ट हो, आपको तो आता है, सब कुछ आता है। बस थोड़ा सा जानकारी आपको नहीं थी, उसके वजह से आज आप असफल हुई हैं। आपको जानकारी बहुत है, लेकिन आप थोड़ा सा सहयोग किसी का पाई होती, थोड़ा सा उंगली कोई पकड़ा होता तो आप भी आज सफल हो जाती। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है,
बुढ़ापा नहीं आ गया है, काम करने का जब भी मन करे तब करना चाहिए। बिना सोचे बलुआ से लड़ी बैठे, बिना सोचे बलुआ से लड़ी बैठे, बिना सोचे बलुआ से समाए कहीं बेटी कुछ ना बताई हो, बहनी कहीं बहनी कुछ ना समझाई हो, भौजी कहीं नैहर के बात ना बताई हो, बिना सोचे बलमुआ से कही दिहला। अरे राम रे का छक्का आ गया, ठीक है छक्का। पढ़ना आता है सब मुझे, हाँ आता है। ऐड आ रहा है, ओके। हंस रही हो, किस बात से हंस रही हो? हमसे हमारे पति से लड़ाई हो जाती है थी, इसलिए छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, शुरू शुरू में सब कुछ होता है सिस्टर, मेरा भी हो रहा था। शुरू शुरू में सब कुछ होता है, मेरा भी हो रहा था, लेकिन क्या करें। चलने दीजिए चलने दीजिए प्लीज़, हम कुछ नहीं, हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, हमारा काम है, हम काम करके आगे बढ़ जाएंगे। हम घर का काम करेंगे, बच्चों का देखभाल करेंगे, सारे काम करेंगे, तब अपना काम करेंगे। धीरे 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 समय के साथ सब बदल गया। अब राजी हो गए तो क्या करेंगे काजी, सब राजी हो गए फिर धीरे धीरे। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सब रोज राजी हो जाए, कुछ न कुछ लोग को तो लड़ाई होती रहती है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा। बिना सोचे से कहीं बैठे, बिना सोचे बलमुआ से बैठे, बिना सोचे बलमुआ से लड़ी बैठे। तुम कहती हो वीडियो बनाने लगे लड़ाई हो गई, हमारी पूजा सिस्टर का काम क्या हुआ? इसके खुशी की बात यह है कि जब से वीडियो बना रहे तब से लड़ाई बंद हो गई। इसको टाइम नहीं है लड़ाई करने के लिए। इसको टाइम नहीं है लड़ाई करने, मोबाइल में घुसी रहती है। जब से ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया ना, तब से इसको लड़ाई करने का, अपने पति से लड़ाई करने का टाइम नहीं है। पहले रहता लड़ाई था, टाइम रहता था तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, एक नहीं करे वो कर नहीं करे, इस नहीं करे उस नहीं करे। अब अपने मस्त रात मोबाइले में।
कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। हमें खुद टाइम नहीं है, काम करने के चक्कर में लड़ाई कहाँ करूँगी। देख लो स्मिता दीदी, सीख लो पूजा सिस्टर का बात। जी हाँ दीदी, इतना मोबाइल में हम व्यस्त हो गए हैं कि हम पति को ध्यान नहीं देते, पति कितने बजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपने काम में हम खुद ही मस्त हैं। घर का काम, बच्चों का काम, वीडियो का काम, लाइव का काम। लड़ाई बंद हो गई हम सबकी। पहले हमारे पति देर से आते थे रात को, उसी पे एक बात हो जाती थी, एक बार झटका लग जाता था। कितना देर की आया, कब से हम खाए ना आई वही से बैठी है, एक ही फोन नहीं कही पाया, है ना। ये है लड़ाई का शुरुआत। लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, 2-4 झटका बटका इसी में हो ही जाता हम। अब है चलो नहीं आए, हम अपने वीडियो में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं। देर से आए दुरुस्त आए, कब आए कैसे आए। मस्त रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो, खुश रहो। आशीर्वाद दे रही है पूजा सिस्टर, मस्त रहो, अपने अपने काम में व्यस्त रहो। अभी जाके मेरा बुखार उतरा था नहीं क्या, सुबह से जान लो बुखार रहा नहीं, कुछ बोले मना ना कहा रहा। जब से वीडियो बनाने लगी हूँ यूट्यूब पर करने लगी, तब से मेरे पति बहुत खुश भी हैं, क्योंकि उनसे झगड़ा नहीं करती हूँ। टाइम नहीं पा रही हो झगड़ा करने का, अपने मोबाइल में बिता देती है। वही तो मैं बोल रही हूँ, देर से आते थे तब बिगड़ती थी, एक नहीं किए वो नहीं किए, टाइम नहीं है, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, हमको कहीं ले नहीं जा रहे घुमाने के लिए, इस बात से लड़ाई हो जाती थी। कहीं जा नहीं रहे, इसी घर में रोज़ खाना पानी बनाते, टाइम भी जा। अब सोच रहे हैं कहीं न जाएं, जो मार के अपने वीडियो में घुस रहे हैं बस। हम जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे वीडियो में सब्सक्राइबर कहाँ नहीं मिल पाएंगे, हमारा वाच टाइम नहीं मिल पाएगा। दुनिया भर की बातें आती है। कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत आकाज होता है, समझ लीजिए। 2-4 वीडियो भले बन जाएगा, लेकिन आकाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो अच्छा लगता है वो पति करने नहीं देते हैं। आप बहू थी, जैसे आप नई बहू थी, उस जगह अगर कोई भी पति होते तो सब बिगड़ते बहना। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे नई बहू थी, नई दुल्हन थी गांव की, घर की, तो जिस समय तुम आप डांस का चुनी हो, उस समय आपको डांस वाला नहीं चुनना था। बस जैसे लिपसिंग करता है सब, लिपसिंग वैसे कहते हैं कि मतलब गाना का ओंठ से अपना लिपसिंग करती। घूंघट वाले भी कितने लोग वायरल हुए हैं, समझ लीजिए। घूंघट वाली एक हमारे आती हैं, घूंघट उनका यहाँ तक रहता है, लेकिन क्या उनका मोनेटाइज नहीं, उनका भी मोनेटाइज हो गया चैनल। तो आप पहले ना घूंघट में ही रहकर वीडियो बनाई होती, लिपसिंग किए होते अपना हाथ से इशारा करके कुछ भी, या घूंघट के थोड़ा और वो करके तनिक ऊपर करके, जैसे नई थी तो उनको अच्छा लगता। और जैसे नई थी उसी समय घूंघट के ऊपर डांस हो गया। फिर उसके बाद गांव परिवार है, पति लोग को, घर परिवार के लोग कहने शुरू कर देते हैं कि आपकी बहुरिया नाचती है, आपकी बहुरिया नाचती है ना। इसलिए पति लोग मतलब चिढ़ जाते हैं। हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा, फिर क्या, थोड़ा सा लिपसिंग करती वैसे हाथ से और ओठ से, तब वो डांस वाला वीडियो पहले ना बनाई होती ना, तो उनको भी ना अच्छा खराब लगता, और घर के परिवार के लोग भी कुछ ना कहते। आवाज़ टाइम तो आपको लाइव से पूरा कर लेती आराम से। और पति को पसंद था, अच्छा पति को पसंद था, फिर बाद में क्यों लड़ाई हो गई भाई। पसंद था तो फिर काहे बड़े टेंशन ले लिए। टेंशन नहीं लेना था जब उनको पसंद था। हमारे पति तो डांस वांस ना करना देते भैया, हम साफ बता देते हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बैठ कर सिर्फ गाना गाऊंगी, सर पे पल्लू रख कर गाना गाऊंगी,
सड़क पे ठुमका लगाने नहीं जा रही हूँ। आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा में रह के आपका वीडियो बनाऊँगी। कोई कुछ कहेगा तो उनसे कहना कि सिर्फ फेस दिख रहा है, बोल रही हैं, ना कि वो नाच रही हैं, कमर दिखा रही हैं। और कुछ तब जाके धीरे धीरे वो भी माने। नहीं तो वो भी कह रहे थे गांव देश के क्या लोग कहेंगे, वीडियो बनाती है। बहुत बहुत बातें होती है। ऐड चल रहा है। ऐड को स्किप मत करना सुष्मिता। ऐड को स्किप मत करना। जब हम आए आगे जाने लगे तो लोग पीछे खींचना। अरे तो ये बात तो है, ये कहाँ की बात नहीं, हर जगह की बात है। ये तो है बात। चाहे जो काम करोगी, जहाँ भी आगे जाने लगोगे, पैर खींचने वाले तमाम रहते हैं, लेकिन अपना पैर पकड़ाना ही नहीं चाहिए था। किसी की बात सुनना ही नहीं चाहिए था। अपने काम पे ध्यान देना चाहिए था। ये तो बात सही है, छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, किसी के कहने पर नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सब कुछ सोच समझ के, सबका बात टाल कर तब मिलती है। 10 लोग हैं, 10 लोग को हम खुश थोड़ी कर पाएंगे। हम सबके मन के थोड़ी कर पाएंगे, अपने मन के करेंगे, अपने पति के मन के करेंगे। हमारे फैमिली में, हमारी भी पूरी लंबी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। सास ससुर देवर देवरान 5 लोग, हम खुद ही फैमिली, जॉइंट फैमिली है। सबके मन में अलग अलग मेरे लिए चलता है। मैं सबको खुश थोड़ी करूँगी। सब अपने अपना। मैं अपने पति को जानती हूँ, अपने अपना जानती हूँ, अपनी मर्यादा जानती हूँ कि हमको किस मर्यादा में रह के वीडियो बनाना है, ताकि पीछे बूढ़े हो जाए तो मेरे बच्चे देख सके। नहीं तो कहेंगी मम्मी है नहीं सुनती रही नहीं मम्मी। मर्यादा में वीडियो रहेगा तो कभी हमारे बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी शर्म नहीं लगेगी। बस ये सब है। सबकी बात नहीं मानना है। सबकी बात क्यों माने भाई? सब हमारे मन की बात करेंगे भाई? कोई नहीं करता। सब सब अपने अपने मन की बात करते हैं। हम भी अपने मन का काम करेंगे। बाकी जो डांस करने वो गलत नहीं होते हैं, गलत नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे गांव समाज में है, गांव समाज के लोग हैं तो वहाँ कुछ न कुछ नुक्स घर वाले को भरते रहते हैं, परिवार वाले को कहते रहते, बताते रहते हैं। और कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अपने घर में है। दवाई खावे जब बाबू वाली दवाई ले खा ले तनिक ले आओ। कैसे रहबे? अभी तक के पढ़ा नहीं बनते हैं। कब बदलबू? कल। पेपर अच्छा होगा। हम्म।
काफी अच्छा वीडियो चलाने लगता है तो अपने ही जलने लगते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई चाहता नहीं कि कोई आगे बढ़ जाए। हाँ, कहाँ रहा नहीं? पापा तो पापा कटी हैं, बाल काट के कब तक रखा होगा, नहीं खा रहा। मैं तेरे सर्दी बुखार भाई का ना खा, जितने सर्दी बुखार भाई वो उल्टा सीधा खावा तो और हो ही जाए। निकाल दिया था। एक छिलका सुधा खावा जाता। मार और कोई हमने तो खाए हैं, ना खा लीजिए। डायरेक्ट खा दे कुछ रहा है। ये लाल लाल ये जो है ना ये खाएंगे। कहाँ पाया? नहीं कब? यही से जो चोरत रहे यही जो है ना वो चल पीछे छिलका ना खाओ जा खावा जा गलत। तू खा एक खा ये तो निस्का तू तनिक खा खा दो को काट के छिल ये गड्ढा भाई का खाई गड्ढा का दिखा छिलका ना निकाल रहा है। लड़ा जी करा काय खे फेंका जी धाई दे और हम लोटो तन धाई दे गलती में चला गया। लाइक लाइक धरा औ खाए वो कल जे पपीता वहाँ या पपीता खाए ले वो चूल्हा लगा पपीता रखा बा किचन में। में खूब कीड़ा पड़ा है कोने में वही मगर उड़े वाला कीड़ा वो तो पड़ा ही रहा था हर जगह। काम मुझे मौजो रखा पड़ा था ज़्यादा कम गिर में हाथ हो उड़े वाले एक मच्छर आवत ना भुनन भुनन करा गया। ना सभी भाई बहन से हाँ संतरा मंगा दिया बुखार सर्दी में तो का उल्टा ही सीधा खाए के मुंह निकला था। हम तो को समझावत है ना उनका तो हरदम खाए में जाएगा तो हरदम खाए बुखार और हो जाए। बिना सोचे बलवा से लड़ी बैठे बिना सोचे बलवा से लड़ी बैठे मम्मी कहे बेटी कुछ नहीं खाया कमान ऐसे बाल ऐसे खाए खाए मस्त मस्त ये कैसे तोरे हाथों में ये आउट हो गया तू खुलाया बोला रे ले खिला मैं लगता आ कितना बोला था प्या प्या हमरा बुढ़ो पे ये सब पंचायत करे जा बगलिए कहूँ चला जा एक है खटिए जा नैहर में कर ली जो यार संगे यारी बिना बिताए गूंगे यारे सोचे ना समझे हम कहीं दिया ले बिना सोचे बलम मेरी आदत है दीदी जी हम बहुत ही निराश क्या लिखी है सीरियस हो जाते हैं इसलिए परेशान में चलते हैं रहते हैं डिप्रेशन। ओ बहना डिप्रेशन में मत जाइए सीरियस ना लीजिए किसी बात को सीरियस ना लीजिए। आप मोबाइल में दिल लगा लोगी मन लगा लोगी ना सारे डिप्रेशन चले जाएंगे आपके जो टेंशन है सब चले जाएंगे।
अच्छी तरह से, जैसे लोग कहते हैं ना लैला मजनू, किसी से दिल लगा लो तो कुछ आगे समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है। कितना भी लोग समझाते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आता ना। वैसे अगर तुम यूट्यूब पे मन से अगर आ जाओगी कि हमको ये करना है, तो किसी की बात ना समझ में आएगी, ना किसी का बात लगेगा तुमको, कुछ भी ना लगेगा। बस अपना काम आप सीरियस नहीं लोगे फिर किसी की बात को। सोच दीजिए कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके बारे में कोई गलत ना कहा हो। प्रधानमंत्री मोदी हैं, रोज लोग मोदी को नहीं कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, वीडियो में देखो डालते ही रहते हैं, मोदी ने किया, रड़ुआ है तो क्या है क्या है। तो भैया भगवान भी कभी किसान के मन के काम नहीं करते हैं। भगवान बरसते हैं, जब भगवान को बरसना होता है बरस जाते हैं, जब नहीं बरसना होता तो नहीं बरसते हैं। तो भगवान को नहीं सब लोग कहते हैं, भगवान को नहीं चाहिए ऐसा करना। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि जिसको के बारे में कोई कुछ कहेगा नहीं। तो हम तो इंसान हैं, तो कहने वाले तो कहेंगे, हम बात को सीरियस नहीं लेंगे, अपना काम करेंगे बस। सीधी सी बात है। कितना भी अच्छा काम करेंगे कहने वाले तो कहेंगे, हम किसी के बात काहे लेंगे, हम अपना काम करेंगे बस। अपना टाइम से खाना पानी बना के अपना घर परिवार का जो काम है उसको करके अपना टाइम निकाल के अपने मोबाइल में घुस जाओ। दुनियादारी छोड़ो, कौन क्या कहता हमसे क्या पड़े। जा रहे हैं मोमोज बनाने भाई, अब टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, मोमोज बनाने का समय हो गया।
सभी भैया दीदी से बाय करती हूँ, लाइव से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी से, बाय बाय।